Okay, welcome back. So we are already familiar with that जो हमारा VHDL code है, it will have these three units. Now let's try to formally structure a code. We take a simple circuit, and the circuit I am taking here is this simple सा circuit लेंगे, and we'll try to code this circuit using VHDL. So simple सा circuit है. I have three inputs A, B, and C. I have an OR gate that combines my inputs A and B. Then I have an AND gate that combines the output of this with the third input C, and ultimately I get an output D. Okay. Overall जो मेरा black box है, it is something like this. ठीक है. And we have to write a VHDL code for this particular case. Okay. And let's call it gate underscore 1. Now the first part of our VHDL code is the library declaration. So we have one big library. तो यहाँ पे लिखते हैं library IEEE. Then we put a semicolon. VHDL में whenever you have to end a script, it is ended using a semicolon. So मैंने library initiate की. अब इस लाइब्रेरी में मुझे देखना है कि कौन सी पैकेजेस मुझे चाहिए. नाउ जो मेरा सर्किट है जिसके लिए मुझे VHDL कोड लिखना है, इट ओनली कंटेन्स लॉजिकल ऑपरेटर्स और एंड, ठीक है, विच मीन्स आई विल रिक्वायर ओनली वन पैकेज. यूज़ IEEE.std_logic_1164, and I will be using all the components that are supported by this package. Okay. Now this package will suffice for this circuit, but it is always a good practice कि आप at least 2-3 packages declare किया कीजिए. Now apart from declaring this, I will also declare this package, although this package is not required in my current circuit, but make it a habit. std_logic_earth.all, and define one more. We will take them separately कि किस पैकेज का क्या काम है. std_logic_unsigned.all. So make it a habit every time you write a VHDL code, at least define these three packages: the logical package, the arithmetic package, and the unsigned package. We'll have a brief discussion later on what is the function of each of these packages. ठीक है. तो ये तो हो गया library declaration. This is the first part of our VHDL code. Then the second part is our entity declarations, wherein we specify our input and outputs that are existing in our circuit. अब आपके input ports पे you have A, B and C, और आपका output port D है. In between आपका एक और signal यहाँ पे generate हो रहा है. Let's call it E. But this is not a port because this is generated within the circuit. So entity में we only define our input and output ports. So the format is something like this. We will start with the keyword entity. ठीक है. Then we will give some name. Entity is keyword, ये तो लिखना ही लिखना है. Then entity name can be anything. For example, in this case, I will write gate1, gate_1. So this is entity, this is entity name. Then there is another keyword is. Okay, so general format is the keyword entity, then give some entity name, then the keyword is. Again I want to reiterate that VHDL is case insensitive. आप सोचें कि मैंने यहाँ पे कैपिटल में लिखा. It is just to distinguish a keyword from a general word in VHDL. ठीक है. Otherwise it doesn't matter. आप लोअर केस में भी लिख सकते हैं. So with this आपने initiate किया अपना entity using entity name gate_1. Then we have another keyword port.
प्लीज़ नोट मैंने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया, सो दिस इज़ इन कंटिन्यूएशन, अभी ये स्टेटमेंट ख़त्म नहीं हुआ। फिर पोर्ट में आप डिफ़ाइन करेंगे कि आपके पोर्ट्स क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल आई हैव ए कॉमा बी कॉमा सी, देन आई हैव अ कोलन। इनका मोड इन है, जैसे मैंने कहा पोर्ट में यू डिफाइन टू थिंग्स, मोड ऑफ पोर्ट एंड द टाइप ऑफ पोर्ट। नाउ मोड इज़ इन। नाउ टाइप अगर आप देखेंगे दिस विल हैव अ टाइप बिट, या तो इसका 0 1 वैल्यू होगा या 1, ठीक है, फ्रॉम योर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। और बिट के लिए जो डेटा टाइप हमारे पास है, इफ़ इट इज़ अ सिंगल बिट, इफ़ इट इज़ नॉट अ वेक्टर, वी यूज़ द डेटा टाइप std_logic, देन वी विल एंड दिस, ठीक है। सो अभी तक मैंने क्या किया है, आई हैव डिफाइंड my input ports A, B and C, mode is in, type is std logic. Similarly, I will define my output port D, mode is out and type is std_logic, ठीक है। आ गए मेरे 4 के 4 पोर्ट्स, क्लोज द ब्रैकेट एंड देन पुट ए सेमीकोलन, ठीक है। प्लीज़ नोट द डिफरेंस, यहाँ पे मैंने सेमीकोलन डाला बिकॉज आई हैड सम मोर पोर्ट्स टू डिफाइन, दैट वाज डी। जब सारे पोर्ट्स डिफाइन हो गए वी विल पुट ए ब्रैकेट देन पुट ए सेमीकोलन, ठीक है। एंड देन वी विल एंड आवर एंटाइटी यूजिंग द कीवर्ड एंड एंटाइटी, and this will complete my second part. So every time you have to define your entity, you have to declare your ports. This is the format you will follow. You will start with the keyword entity, use some entity name, then the keyword is, then port, define your ports in the sense कि उनका mode क्या है, उनका type क्या है, then end your entity with the keyword and entity. This is the second part. Now we will come to the third part, the main part, wherein we have to write the architecture of our circuit. So the architecture part, again it starts with the keyword architecture, ठीक है। फिर किसका आर्किटेक्चर, जो हमने एंटायर गेट 1 डिफाइन किया, इसका आर्किटेक्चर हमें चाहिए। सो यू कैन यूज़ एनी लिटरल वर्ड, टिपिकली वो यूज़ बिहेवियर, बट दिस इज़ नॉट ए कीवर्ड, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ दिस, फंक्शनैलिटी ऑफ दिस, वॉट एवर यू वांट टू राइट। बिहेवियर के बाद ऑफ इज़ द कीवर्ड, फिर जो आपने एंटाइटी नेम रखा है एग्जैक्टली वही आप लिखेंगे। सो दिस इज़ द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हाउ यू स्टार्ट एन आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर, कीवर्ड, बिहेवियर कैन बी एनीथिंग, आप बिहेवियर की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, फंक्शनैलिटी, फंक्शन, स्ट्रक्चर, कुछ भी। ऑफ इज़ अ कीवर्ड, गेट 1 एग्जैक्टली सेम एंटाइटी नेम जो यहाँ पे आपने रखा है, देन इज अगेन यू विल नॉट टर्मिनेट दिस स्टेटमेंट, इट इज़ इन कंटिन्यूएशन, ठीक है। देन यू विल बिगिन writing your architecture using the keyword begin. फिर आप architectural description देंगे in a specific format. Like in this case, I have this signal E. Assignment operator जो आप यूज़ करेंगे ये है. There are some other assignment operators. We'll take them separately. कहाँ पे कौन यूज़ होगा. लेकिन मेनली आर्किटेक्चर में जब भी आप किसी पोर्ट या किसी सिग्नल को वैल्यू पास करेंगे, we use this assignment operator which is less than equal to. So E is equivalent to A or B, then I will terminate this statement. फिर इसी के साथ I will put a second statement. Just a second, I will just remove it here. Okay, D is equivalent to E and C. दिस कंप्लीट्स द आर्किटेक्चर, ठीक है। लेकिन आप इस यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यू आर यूजिंग दिस सिग्नल ई, ये आपने डिक्लेयर नहीं की है। ए बी सी और डी आपने पोर्ट्स में डिफाइन किए हैं, लेकिन ई आपने डिक्लेयर नहीं की है, ठीक है। नाउ ई इज़ नॉट अ पोर्ट, तो जब भी कोई ऐसे सिग्नल आपके पास आ जाए विच इज़ नॉट अ पोर्ट, तो दैट सिग्नल यू हैव टू डिफाइन in this region between architecture and begin. और उसका format कैसा है? It is something like this. We use the keyword signal because this is actually a signal.
then signal का नाम E, and we only have to define it as type std underscore logic. Mode यहाँ पे define नहीं होगा. So this is the big difference between defining a port and an intermediate signal. ये port में आपने mode भी define करना होता है, signal में ऐसा नहीं है. And if you wish, you can always initialize it कि what will be the initial value of this signal. उसके लिए this is the assignment operator. So we have done two. जब आप मेन आर्किटेक्चर में असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे, इट इज़ दिस लेस दैन इक्वल टू. जब आप किसी सिग्नल को इनिशियलाइज करेंगे, इट इज़ कोलन एंड इक्वल टू. ठीक है, एंड इनिशियलाइज इट से दैट इनिशियल वैल्यू इज़ 0. ठीक है, सो सिग्नल भी डिफाइन हो गया, विच मीन्स all the ports and all the signals in your architecture, they have been defined, or B and B. Then we will simply end our architecture. जैसे entity end किया था, likewise we will end our architecture and put a semicolon. Now this is the complete VHDL description of this circuit on the right side. जब आप ये description किसी synthesizer में डालेंगे, it will give you the implementation. Okay? We'll stop here. Next video we will do some more complicated design and see what will be the changes in these entities and architectures. Thanks.